In Allah's name, the munificent, the benignant, glory be to Allah, and may the drizzling and mizzlings be upon our sympathetic and sincere Prophet Hazrat Muhammad, peace and blessings be upon him. I'm Professor Azam Hussain, and today we gonna learn how to create more and more sentences. I have selected a poem. It's a very interesting poem, and from the text book of first year FSC. It's the seventh poem, and at page 70, the poet says in this poem, the title of this poem is Times, and writer or author of this poem says, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So in Urdu we can say हर चीज का एक मौसम है. To everything there is a season. हर चीज का एक मौसम है and a time to every purpose under the heaven. और हर मकसद के पूरा होने का एक टाइम है. आसमान के नीचे हर मकसद के पूरा होने का एक टाइम है. Now you can form another sentence. There is to everything there is season. To everything there is a time, or and a time to every purpose under the heaven, and a time to do anything under the heaven. That the positive things or negative things. If positive things are being done, and whosoever will do this, he will be awarded. And if it is a negative or wrongdoing or misdeed or wrongdoings, then he or she will have to face the music, will have to face the consequences. All right. The writer says a time to be born, and we can use another sentence, a time to produce, a time to go, a time to come, a time to die. So it's a reality. Each and everyone have to die. Each and everyone has to die. And sooner or later, we have to go. We have to leave this world. So you can say a time to do anything, time to finish, a time to complete any task, any assignment, or any responsibility, a time to fulfill any responsibility, a time to plant, a time to sow seeds, a time to grow, a time to cultivate, and a time to pluck up that which is planted, which has so far been planted. Now you can reap. कोई भी पौधा है उसको काश्त करने का, उगाने का एक वक्त है, स्पेसिफाइड टाइम है. और जो काश्त किया गया है, जो उगाया गया है, जो आपने ग्रो किया था, उसे भी काटने का एक टाइम है. Whatever has so far been invested by you, there is a time to earn its profit. So you may change the word and you may create another word. A time to break down and a time to be built up. Whenever somebody demolishes, somebody abolish, eradicate, eliminate, खत्म करते हैं. ठीक है, uproot, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं. Time to uproot, a time to root out, जड़ से उखाड़ देते हैं. A time to shut down and a time to build up, a time to construct, a time to make, right? Make your plans. So you can form another sentence after this. So a time to weep and a time to dance. And here we can say a time to smile, a time to laugh, a time to enjoy, a time to entertain, or a time to entertain or amuse, a time to weep, a time to be sad, a time to be gloomy, a time, right? So many sentences can be formed.
a time to cast away stones. Cast mean फेंकना. कॉस्ट ड्रामे की कॉस्ट भी है कि उसमें हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा, और कास्ट वोट को कास्ट करना भी है. और कास्ट नजर से देखना है. डू नॉट कास्ट एन ईवल आई, किसी को बुरी नजर से न देखो. यहां पर कास्ट थ्रो करने के मानों में. कास्ट अवे स्टोन, जैसा कि तोड़ फोड़ का, गिराने का एक वक्त है और बनाने का भी एक वक्त है. टाइम जो मतलब कंस्ट्रक्ट करने का एक वक्त है और रोने का एक वक्त है. डांस का शादी ब्याह के मौके पर, खुशी पर एंजॉय किया जाता है, उसका भी एक वक्त होता है. और अब यहाँ पर यह है कि कास्ट स्टोन, पत्थर फेंकने का भी एक वक्त है, पत्थर मारने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी वजह से, मतलब फीलिंग्स हर्ट होती हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या इमोशंस हर्ट होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि भी सैडनेस हो, लेकिन वो खुशी के भी आंसू हो सकते हैं, वो शुक्राने के भी आंसू हो सकते हैं, वो गॉड फियरिंग की कॉज भी हो सकती है. और पत्थर फेंकने का और पत्थरों को इकट्ठा करने का. एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन टुगेदर. बिल्डिंग बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं, कोई और कंस्ट्रक्शन है, तो चीज़ें इकट्ठी की जाती. अ टाइम टू गैदर थिंग्स एंड अ टाइम टू sell things or dispose of things. A time to embrace, and a time to embrace, a time to hug, a time to tap, or a time to enfold, a time to hold tightly in arms, right? And a time to cuddle, and a time to refrain from embracing. लेकिन रियलिटी इस जो है ना वर्ड्स में बयान हुई है कि भी एम्ब्रेस करने से हमने अवॉइड कैसे करना है. ये तो करंट मैसेज है. रियलिटी आपने मतलब देखी कि भी जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है, उसमें एसओपीज के मुताबिक जो है किसी को ऐसा करने की जो है इजाज़त नहीं है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि जो है दूसरे भी महफूज रह सकें. मतलब एग्जैक्ट बात साबित होगी कि भी एम्ब्रेस करने का एक टाइम है, गले लगाने का और गले लगाने से अवॉइड करने का भी एक जो है ना टाइम है. अ टाइम टू गेट, सो राइट, वेरी गुड. अ टाइम टू अटेन, अ टाइम टू एक्वायर knowledge, a time to gain knowledge, a time to experience things, and a time to lose. So when we cast away things, when we dispose of things, when we sell things, useless things are being sold by us, and a time to keep, रखने का एक वक्त, the things you keep in your custody, and a time to cast away, यानी डिस्पोज करने का भी है और अपने साथ रखने का भी है. एंड लेटर के भी अ टाइम टू रेंड, फाड़ने का, चीज़ें फाड़ने का. व्हेन वी टीयर और व्हेन वी ब्रेक समथिंग टू गेट नट्स, स्पेशली द आमंड और समथिंग लाइक दैट. एंड अ टाइम टू सो, ये स्यू नहीं है, सो है. वर्ड क्या है? सो. स्टिच करने का एक वक्त है, फाड़ने का एक वक्त है. टीयर, टोर, टॉन, फाड़ना, राइट. अ टाइम टू कीप साइलेंस, चुप रहने का एक वक्त है. अवॉइड टॉकिंग. अ टाइम टू स्पीक, अ टाइम टू से, अ टाइम टू डिफाइन, अ टाइम टू a time to explain, a time to illustrate, a time to solve problem, a time to address, a time to deliver speech, a time to avoid speaking, right? A time to listen attentively, a time to listen carefully, a time to hear something. So you can change verb after verb, and you will find the new words. In fact, everything happens at an appropriate time. Nothing happens before proper time. कोई भी चीज़ है अपने वक्त पे होती है, और जो है वक्त से पहले कुछ नहीं होता जो अल्लाह को मंजूर होता है. It's a will, it's Allah's will. Everything has been scheduled by the nature. अल्लाह ने हर चीज़ के होने का
और ना होने का भी एक वक्त जो है मुकर्रर किया है, और अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक टाइम। अल्लाह ही बेहतर जानता है, गॉड नोज बेटर, एंड what will happen and when will it happen, राइट। जुमले बनाने हैं, एक वर्ब को आपने मतलब अ टाइम टू स्माइल है, अ टाइम टू लाफ है, अ टाइम टू एंजॉय है, अ टाइम टू बी एक्साइटेड है, अ टाइम टू बी हैप्पी है, अ टाइम टू बी फ्रेंडली है, अ टाइम टू ईट, टाइम टू ड्रिंक। इस तरह आप वर्ब मिलाते जाएं और पोएम बनाएं, आप इससे भी बड़ी पोएम बना लेंगे। ये क्रिएटिव पावर, सिर्फ एक जुमला है बेस कर रहा है, और लेकिन वर्ब बदलते जाएं। अ टाइम टू ईट है और ईट के साथ कोई और चीज़ लगा लें, अ टाइम टू टेक मेडिसिन है, अ टाइम टू कंसल्ट डॉक्टर है, इस तरह की बातें हैं। Thank you very much. Please do subscribe my YouTube channel. I shall be highly grateful to you, and share these lectures with others, and keep improving yourself, keep educating yourself. May Allah Almighty bless you. And do not forget to subscribe my YouTube channel, and keep watching and listening my videos and lectures again and again. Thanks a lot.